His Excellency, Mr. Sher Bahadur Deuba, Prime Minister of Nepal, Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony. We shall begin by witnessing the joint inauguration of projects. First is the launch and operationalization of the 35-kilometer long cross-border rail link from Jayanagar in Bihar to Kurta in Nepal. I request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for the project by pressing the launch button. You have to put hands. Now, I request both the Prime Ministers to flag off the inaugural run of the cross-border passenger train service. Next, we have the inauguration of the 90-kilometer long 132 kV Solu corridor transmission line built with the Indian line of credit at a cost of rupees 200 crores. I request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for the project by pressing the launch button. Excellencies, ladies and gentlemen, I now request both the Prime Ministers to jointly launch the RuPay card in Nepal by pressing the launch button. Coming up next, we will witness a video clip on the progress in construction of 132 health facilities in Nepal undertaken with a US $50 million in post-Earth reconstruction grant assistance. The Gorkha earthquake of 2015 in Nepal impacted lives of millions of people and caused a wide-scale damage to property and public infrastructures. To supplement the efforts of Government of Nepal in the post-earthquake reconstruction, Government of India committed $1 billion comprising of $250 million as grant for housing, heritage, education, and health sectors, and $750 million as line of credit. Ladies and gentlemen, now we have the exchange of 4 documents signed between India and Nepal. For the first, I request Mr. Devendra Karki, the Energy Secretary of Nepal, to hand over the signed copy of the framework agreement of the International Solar Alliance to Dr. Ajay Mathur, Director General of the International Solar Alliance, the ISA. We welcome Nepal's entry into the International Solar Alliance. The second is the exchange of MOUs on enhancing technical cooperation in the railway sector between Mr. Rabindranath Shrestha, Secretary, Ministry of Physical Infrastructure and Transport from the Government of Nepal, and Shri V.K. Tripathi, Chairman, Indian Railway Board.
Third is the exchange of agreement on supply of petroleum products between Sri Shrikant Madhav Vaidya, Chairman Indian Oil Corporation Limited, IOCL, and Dr. Ganesh Prasad Pandey, Chairman Nepal Oil Corporation, NOC. The fourth is the exchange of agreement for sharing of technical expertise also between the IOCL and the NOC. Excellencies, ladies and gentlemen, this concludes the project inauguration and the exchange of agreements ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Honorable Prime Ministers, Ministers, members of both delegations, friends from the media, we will now begin with the press statements. May I now request Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to make his press statement. Sir, the floor is yours. Your Excellency, Prime Minister Sher Bahadur Devba ji, distinguished delegates, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री देवबा जी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज भारतीय नववर्ष और नवरात्रि के पवित्र अवसर पर देवबा जी का शुभ आगमन हुआ है। मैं उनको और भारत और नेपाल के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देवबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देवबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, आज देवबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की।
यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।